The Solitary Reaper, a poem, class 10th रो देखो एठी पिला माने विलियम वार्सवर्थ जे कि सोलिटरी राइपर्स पोएम लिखचंती आमे से पोएम रो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करिवा टिके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट आस्क द पासर बाय माने रास्ता रे जाउतवा लोक मानकु एंड व्हाई काहे कि पचारले। The poet asks the passerby, many passengers, to stop and listen to the raper's song or pass gently, for they make any noise or harsh movement. Since man disturb करिवे तो से राइपर गीत गाउचे से disturb हो जिवो. It might disturb the राइपर, and this will eventually means disturbing the song. आर अर्थ या बोजे से गाउतवा गीत मध्य डिस्टर्ब हो जिवो. That's why तेनु करी the poet asked the passerbys, okay, passerbys to stop and listen and don't make any noise. Over. अच्छा, second question जीवा पिला माने, what is the tone of the Riper's song? How do you know this? अब आंसर देखो कौन कहबा ना, the tone of the Riper's song was plaintive to the poet, as her language was not clear to poet. The language भाषा सत्य स्पष्ट नथिला. He could only make a guess, खाली तार मीनिंग को से गेस करथुला about the theme of the song. से जो गीत गाउथला तारो थीम माने विषय वस्तु ऊपर से गेस करथुला, खाली बुझ पार नथुला ठीक से. As she was working alone, it appears to me that she might be singing about her life. जेहेतु से एकुटिया से झीटी गीत गाउथला ए भाबिला जे it appears to me मते एमती लागिला बोल से कहउचंती जे she might be singing about her life, तार निज लाइफ विषय रे एवं पास्ट सारो अतीतर दुख विषय रे से गीत गाउथला पया पोएट गेस करछंती. राइट, तो तापर जीवा 3 नंबर, whose voice is thrilling, कार voice thrilling थिला, and how does the poet compare the Riper's song to it. तापर से राइपर्स जे गीत गाउथला ता सहित एटा को केमती कंपेयर करछंती. कंपेयर माने तुलना. हो देखिवा एबे से कहउचंती द आंसर रे, the voice of a cuckoo is thrilling, कोइली रे voice जेमती thrilling, as it breaks the silence of the sea in the spring season. It also gives hope to the sailor in the sea, as they know that the land is near. Silence ता break होबो जेतो समुद्र रे आमे सेलिंग करके आस्तबा से समय लैंड दुसिबा संगे आम साइलेंस ब्रेक हो. सिमती स्प्रिंग सीजन रो साइलेंस को जेमती कुको माने कोइली ब्रेक करता है, ठीक सही बड़ी. द राइपर्स वॉइस सीम्ड मोर थ्रिलिंग टू द पोएट, पोएट को मोर थ्रिलिंग लगला देन द वॉइस ऑफ द कुको रो वॉइस कोइली रो वॉइस थारु मध्य मोर थ्रिलिंग बोल के से एठी डिस्क्राइब करछंती. कार वॉइस को, सोलिटरी राइपर रो वॉइस को. से जेतबे गाउथला watched carefully and poet said this. Next 4 number question देखिया पिला माने, who welcomes the very band of travelers. How is the Riper's song as compared to that of the Nightingale. Nightingale आगुड चढ़े पिला माने आ सहित तार राइपर रो सॉन्ग को से केमती तुलना करछंती. राइट, ए क्वेश्चन तार दुईटा खंड अछि. फर्स्ट खंड, who welcomes the very band of the travelers. राइट, दी तापर नाइटेंगल विषय केमती कंपेयर करा हिच. चलो देखिबा कोन कहउछ से. रोज द नाइटेंगल तो गुटे बात तुम जानछो, नाइटेंगल वेलकम्स द वेरी बैंड ऑफ द ट्रैवलर्स इन द अरेबियन सैंड, अरब देशर कथा एट. हर वॉइस गाइड्स द ट्रैवलर्स टुवर्ड्स द सैडी हाउंड्स. Here एठी poet says that the Riper's song is even more welcoming than that of the Nightingale. नाइटेंगल रो सॉन्ग थारो राइपर रो सॉन्ग ता आउरी अट्रैक्टिव अछि बोली कहउचंती. काहे कि द राइपर्स वॉइस appears to be sweeter than that of the Nightingale to the poet. नाइटेंगल बार्ड रो वॉइस थारो मध्य
राइट आर वॉइस टा बहुत appearing बोली से स्वीटर बोली कहउछन मिठा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जे पिला 5 नंबर why was Wordsworth not able to understand the Riper's song हेले Wordsworth माने पोएट आरो से राइपर रो सॉन्ग को बुझी पार नथला काहे why the Riper was singing in Scottish स्कॉटलैंड रो जे से तनु से भाषा रे से पढुतला मा गीत गाउतला से भाषा विलियम वर्ड्सवर्थ को जणा नथिला although he was charmed by the song of the Riper and wanted to stay there forever तार गीत एते अट्रैक्टिव थिला जे से forever रहि जाय पारबी सिटी बोली कहला बट से बुझी पार नथिला काहे कि भाषा अलगा थिला it was not within his ability to understand बोले तार एबिलिटी नथिला क्षमता नथिला बुझिबारे काहे कि the theme or the meaning of the song due to the language barrier माने से जो लैंग्वेज रे से गीत गाउतला से लैंग्वेज आपा गोटे बैरियर माने प्रतिबंधक होइतला काहे कि से लैंग्वेज ताको बुझुनी अच्छा कहलो से को भाषा रे गाउतला स्कॉटिश एबे पिला माने नंबर 6 के जिबा व्हाट डज द पोएट गेस से कोन गेस करथले अबाउट द थीम ऑफ द राइपर्स सॉन्ग से राइपर जो गीत गाउतला तार थीम बोले सारांश बा विषय वस्तु विषय रे पोएट कोन गेस करि पारले भाषा तो बुझी पार नथले गेस कोन कले देखिबा The poet guesses that the song of the Riper may be about her sorrow, तारो sorrowness विषय रे, loss of life, life रो loss विषय रे, okay, और what she suffered in the past, अतीत रे से कौन suffer करथिला बोधे से विषय रे से गीत गाउथबो, एमते अनेक संदेह से कर चलछन्ते. He also thinks that the theme of her song could have contained some more humble matter of day to day life, दैनन्दिन तारो जीवन विषय रे मध्ये से गाउथाई पारे. or some natural sorrow or loss or pain किंबा केतक वास्तविक जीवन रो दुख लॉस आ कष्ट विषय मध्ये से गीत गाई थाई पारे he is guessing एमती गैस करछन्ते जीवा पिला नेक्स्ट नंबर 7 को what is the valley flooded with and how valley माने से उपत्यका विषय से कहछन्ते the valley is flooded with the song of Riper तार गीत रे भासुतला The Riper is working in the field से गुटे field माने चाषो जमी रे काम करथुला singing all herself and her song is the only thing that breaks the silence of the valley आ से कोटिया थिला आ गीत गाउथुला से एरिया रो साइलेंस को ब्रेक करथुला तार से सॉन्ग आ से सॉन्ग बहुत हार्ट टचिंग थिला बोले से कहउचंती तनु thus the silent valley is overflowing with the sound of Riper's song तार सॉन्ग रे से एरिया जाको उत्साहित होथला नेक्स्ट 8 नंबर हाउ डिड द Riper's song affect the poet एटा पोएट को केमती इफेक्ट कला कोन से राइपर रो सॉन्ग ओके the song of the Riper was really very attractive and heart touching for the poet. He felt as if her voice was the sweetest of all the singing creatures. देखो जत्ते singing creatures माने अछंती माने birds माने तांको ठारो मध्ये आर voice आको बहुत attract करथिला. Her song appeared never ending to the poet. से तो एमती कहतला if possible I can stay here forever. बहुत दिन जाई रहि जाय कि मध्ये गीत सुनले मध्ये समय जणा पड़ने बोल से फील करथले. So the poem was really, the poet was really very much affected by the melodious song of the Riper. Next number 9 पिलामने important question इटा what in the poem tells us about the poet's love of solitude. Solitude बोले singleness पिलामने, right? So the poet was walking alone एकुटिया in the highlands of Scotland when he encountered the Riper बोले फेस कला Riper को working and singing alone in the field गुटे field से काम करथुला आ गीत गाउथुला. This tells us that the poet was out alone, solitary means alone, when no one else was out. केही नथिले सेतबेले ये एकुटिया जायथला. He was also enjoying the beautiful mountain range पर्वतमाला सेठरो
and the Riper song without hasting to reach anywhere ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକି ତାର ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣିବି ବୋଲି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା କାହା ଭିତରେ ପୋଏଟ୍ ଭିତରେ and all these tells us about poet's love for solitude ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଆ ଯେ ପଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲନେସ୍ ଲୋନଲିନେସ୍ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ with whom does the poet compare the Riper song କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦି ଜଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏକ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବ ତମେ the poet compares the Riper's song to that of ଏକ nightingale ଦୁଇ the cuckoo the nightingale bird ଆଉ cuckoo ମାନେ କହିଲି ହେଲା he finds the Riper's song was more welcoming than that of nightingale ବୋଲି କହିଥିଲା ତାର ଭାଷା ଏଇଟା who sings in the Arabian sands and her voice was more thrilling देखो कुको पाखे thrilling को लिंक होबो more thrilling than that of cuckoo जे कि who sings in the spring time okay so ए थिला तमरो केते गुडे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स solitary Riper पिला माने thank you very much for watching thank you very much please like and subscribe next part next